Hello everyone. Today we are going to start first chapter of our syllabus, and that chapter is solutions. In this chapter, the first topic is concentration of solutions, and I think you know very well about the topic concentration of solution, as we have studied this topic in 11th class also. So you can revise that topic, you can solve numericals related to that topic, सेम है वो, उसमें कोई चेंज नहीं है बिल्कुल भी. So today we are going to start next topic of this chapter according to your level beta, and that topic is solubility of solids in liquid. Class 12 chemistry, and today we are going to start topic chapter 1 solutions. Today we are going to start topic solubility of solids in liquids, or we can say solutions of solids in liquids. This topic here, solid acts as solute and liquids act as solvent. You know very well, during the formation of solution we dissolve solute in solvent, not solvent in solute. So here solid है जो, this solid acts as solute, and this liquid है जो, this acts as solvent. Liquid acts as solvent. So how we can discuss the solubility of solids in liquids? Solubility simple topic, बिल्कुल. solubility meaning कि भाई कितनी मैक्सिमम अमाउंट हम डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी सॉलिड की इन द गिवन लिक्विड. टू चेक solubility of any solid in liquid, we have to take specified amount, fixed amount of solvent, and in that fixed amount of solvent we dissolve the given solid. तब तक डिसॉल्व करते जाएंगे ताकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन दिस. इफ यू कैन डिसॉल्व मोर and more amount of solute, solution is unsaturated, you know. But if we cannot dissolve more amount of solute in the given solution, then it becomes saturated solution. Mean maximum solubility हो चुकी है solid की in the given liquid, उससे ज़्यादा dissolve नहीं हो सकता. That is called solubility of solid in liquid. Simple. Suppose this is beaker, any vessel. In this vessel we take specified amount of liquid. This liquid की specified amount लेंगे हम. 100 ग्राम दिया आपने, 100 ग्राम of liquid acts as solvent, and we take its 100 gram. We take its 100 gram of liquid हमने लिया है. It acts as solvent. Now in this we add given solid. When we add small amount of this solid, then it will dissolve simply, no problem. But if you add more and more amounts in small loads again and again, then ultimately
a limit will reach when no solute is dissolved or no solid is dissolved in this liquid. Means solution becomes saturated. मीन हमें कहाँ तक कब तक डिजोल्व करना है इसको ताकि सोल्यूशन कैसा हो जाए सैचुरेटेड. एट दैट टाइम वी कैन से दैट दिस solute or this solid dissolved in maximum amount in the given liquid or in the given solvent. This is called solubility. मीन हमें कैसा सोल्यूशन बनाना है सैचुरेटेड सोल्यूशन. वी हैव टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन. We have to make saturated solution. So to make saturated solution, how much amount of this solid can be dissolved in the liquid? That is called solubility. So कैसे define कर सकते हैं फिर solubility of solids in liquid? The maximum amount of solid in ग्राम में लेनी है ये आपको. That can be dissolved in 100 gram of liquid. That can be dissolved in 100 gram of liquid to make a saturated solution at a particular temperature. Is called solubility of solid in liquid. Now, factors affecting solubility of solids in liquid. Mainly there are two factors which affect solubility of solids in liquid. Factors affecting. Factors affecting. Solubility of solids in liquids. There are two factors. First is nature of solute and solvent. Mean solid and liquid. तो solid और liquid लिए हमने solid oxide solute and liquid oxide solvent. Nature of solute and solvent. Here solid acts as solute and liquid acts as solvent. And second factor is temperature. Second is temperature. We discuss this one by one. First, nature of solute and solvent. You know very well, basic principle of solubility is like dissolves like. Basic principle of solubility is like dissolves like. Mean जैसा केमिकल सब्सटेंस है वैसे में ही डिसॉल्व होगा. पोलर will dissolve in polars, polar substance will dissolve in polar solvent, non-polar substance will dissolve in non-polar solvents. Okay, mean polar substances dissolve in polar solvents and non-polar substances dissolve in non-polar solvents. Like dissolves like. जैसा है वैसे में dissolve होगा. Polar है तो polar में, non-polar है तो non-polar में. We can discuss it with the help of example. Suppose we take NaCl, sodium chloride. Sodium chloride solid है,
What is its nature? You know very well sodium chloride is ionic compound, and in ionic compound charges get separate completely. Mean Na positive Cl-2 charges get separate. This is polar substance, polar solid. 11th क्लास में आपने डिस्कस किया था पोलर एंड नॉन पोलर. जिनमें चार्जेस सेपरेट हो जाए वो पोलर, जिनमें चार्जेस सेपरेट ना हो दैट इज नॉन पोलर. मीन इफ चार्जेस गेट सेपरेट देन द सब्सटेंस इज पोलर, इफ चार्जेस डू नॉट गेट सेपरेट देन दैट इज नॉन पोलर. चार्जेस कब सेपरेट होते हैं जनरली? जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लिंक होंगे एक दूसरे से, देन चार्जेस गेट सेपरेट ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज. बट इफ atoms of same element linked to each other in any molecule, then there is no difference in their electronegativity and charges do not get separate. Such type of molecules are called non-polar molecules, like H2 Cl2 Br2 I2 O2 N2 F2. All these, in all these atoms of same element linked to each other, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम. बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी तरफ. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम. सो नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस. ऑल दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. नाउ our point is this: we want to check solubility of this solid, and for this we consider two types of solvents. Suppose one is water and another is benzene, or we can say carbon tetrachloride CCl4. Water HOH, water is polar in nature because oxygen is more electronegative than hydrogen. Charges get separate, delta negative, delta positive. This is polar. Charges get separate, this is polar. But benzene and carbon tetrachloride, in these there is no separation of charges. I mean, these are non-polar molecules, non-polar solvents, non-polar solvents. This is polar solvent. Now NaCl polar, water polar, so it will dissolve. NaCl can dissolve in water, but benzene and carbon tetrachloride, these are non-polar, so NaCl cannot dissolve in benzene and carbon tetrachloride because these are non-polar solvents. Mean solubility depends upon the basic principle, like dissolves like. जैसा है substance उसी nature के solvent में dissolve होगा, otherwise not. Now second factor, temperature. Based upon temperature, solids are divided in three categories. Solids are divided in three categories. First, based upon temperature, solids are divided in three categories. First, those substances whose solubility increases with increase in temperature. Second, those substances whose solubility decreases with increase in temperature. Third category, those substances whose solubility does not change or do not change, or we can say is not affected by change in temperature. बट एक काम जरूर होता है यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में कि जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड द टेम्परेचर वेयर दिस टाइप ऑफ चेंज टेक्स प्लेस, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. डिस्कस करेंगे इस कैटेगरी में हम. नाउ वी वांट टू डिस्कस दीज थ्री कैटेगरीज इन डिटेल.
फर्स्ट those substances whose solubility increases with increase in temperature. मीन क्या है इसका मीनिंग? why solubility increases with increase in temperature? 11th क्लास में आपने डिस्कस किया था कि endothermic processes are favored by increase in temperature, exothermic processes are favored by decrease in temperature. वही पॉइंट यहाँ पर यूज होना है. solubility increase, solubility मीन dissolution, यहाँ पर dissolution of solid in liquid, dissolution of solid in liquid, that is going to increase. Dissolution क्या होता है? What do you mean by dissolution? Dissolution is nothing but, what is dissolution? Dissolution is nothing but the amount of, or we can say the process of dissolving solid in liquid or solute in solvent is called dissolution. The process of dissolving solid, or we can say solute in solvent is called dissolution. This, when we dissolve solute in solvent, then energy may release, or in any process energy is absorbed. If energy is released, then that is exothermic, and if energy is absorbed, then that is, if energy is released, then that is exothermic, and if energy is absorbed, then that is endothermic. मीन अब पॉइंट माइंड में रखो कि endothermic processes are favored by increase in temperature and exothermic processes are favored by decrease in temperature. यहाँ पर salt increase होना मीन डिसोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर और ज्यादा डिसोल्व होता जा रहा है. यहाँ पर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज फेवर्ड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसका मीनिंग प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक हियर. मीन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिसोल्यूशन इंक्रीज होगा. मीन मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन सोलवेंट. मीन सोल्यूट प्लस सोलवेंट फॉर्म्स सॉल्यूशन. This solution is formed. During the formation of this solution, heat is absorbed. Mean this process of dissolution of solute in solvent is endothermic here. Heat is absorbed. Mean forward process we can say this is endothermic here. ये endothermic है. And now we can see effect of temperature now according to Lee-Chatelier principle. Discuss किया था अपने 11th में कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन व्हाट हैपन, इसका इफेक्ट अंडू होना चाहिए, इसका इफेक्ट चेंज होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए. जितना इंक्रीज किया वो डिक्रीज होगा. डिक्रीज कब होगा? जब हीट एब्जॉर्ब होगी. मीन हीट एब्जॉर्ब कब होगी? व्हेन फॉरवर्ड प्रोसेस इज फेवर्ड. मीन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉरवर्ड प्रोसेस इज फेवर्ड. और फॉरवर्ड प्रोसेस फेवर्ड होगा तो more and more amount of solute dissolve in solvent to give solution. Mean we can say solubility increases. Mean first केस के लिए अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसकी solubility इंक्रीज होती है with increase in temperature, mean for such type of substance we can say process of dissolution is endothermic in nature. ये माइंड में रखना, यही आंसर है इसका कि why solubility increases. Because process of dissolution is endothermic in nature. Because this. Now examples. इस टाइप का जो बिहेवियर शो करते हैं, these are substances NaCl है, KCl है, सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3, etc. These are the substances which show this type of behavior. Second category now, those substances whose solubility decreases with increase in temperature. इसका जस्ट अपोजिट है. इसमें प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक था, तो इसमें क्या होगा? एक्सोथर्मिक. इन एक्सोथर्मिक मीन हीट इज रिलीज्ड, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, then solution is formed when you mix these two, and in this process heat is released. हीट रिलीज होगी. अब अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मीन सॉल्यूट डिक्रीजेज. वही है कि सॉल्यूट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. मीन
फोर्ड प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक है, इसलिए फोर्ड जो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं दीज आर फेवर्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, बट अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पर तो फेवर नहीं होगा, प्रोसेस मूविंग बैकवर्ड डायरेक्शन एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। मेन रीजन क्या होगा, क्यों डिक्रीज हुई सॉल्युबिलिटी, बिकॉज प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक है, इज एक्सोथर्मिक in nature, इसलिए डिक्रीज हो गई। नाउ थर्ड एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिथियम सल्फेट है Li2SO4, सीरियम सल्फेट है Ce2SO4 होल थ्राइस एक्सेट्रा। ये जो लिथियम और सीरियम के कुछ सॉल्ट्स हैं वो शो करते हैं इस टाइप का बिहेवियर कि उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नाउ थर्ड कैटेगरी, दोज सब्सटेंसेस हुज सॉल्युबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, बट उनमें इन थर्ड कैटेगरी के सब्सटेंसेस में एक चेंज जरूर होता है कि ये वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। We can take example for such type of category, for such type of solids. We can take sodium sulfate decahydrate, Na2SO4 10H2O. Sodium sulfate decahydrate. अगर इसको हीट करते हैं हम above a particular temperature, then it released water molecules of crystallization. ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं क्रिस्टलाइजेशन के, इनको लूज करेगा, ये हीट करेंगे एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग वेपर्स गेट सेपरेट। मीन वो जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हम हायर टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे, देन व्हाट हैपन, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर रिमूव्ड, लूज्ड बाय दिस सोडियम सल्फेट। This temperature where a chemical substance changes from one form to another form is called transition temperature. So if we increase this temperature more than this 32.4 degrees Celsius, mean if temperature is above 32.4 degrees Celsius, then water molecules of crystallization removed converted anhydrous form. But if temperature is below 32.4 degrees Celsius, then again sodium sulfate absorb water molecules and convert in hydrated form. So this temperature at which one form of the substance changes into another form is called transition temperature. So how we can define this? Transition temperature, the temperature at which a substance changes from one form to another form is called transition temperature. एग्जाम्पल देना हो ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सोडियम सल्फेट टेम्परेचर सेट करो इसका, अबो 32.4 करोगे तो सोडियम सल्फेट प्लस 10H2O, अगर बिलो करेंगे तो वापिस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट, सोलबिलिटी कॉज, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आई हुई है। सोलबिलिटी कॉज बोर्ड में आई हुई डेफिनेशन है। सोलबिलिटी कॉज क्या होगी? अगर हम सोलबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड जो अभी डिस्कस किया हमने, इफ वी प्लॉट और इफ वी मेक ए ग्राफ बिटवीन सोलबिलिटी एंड टेम्परेचर, then different curves are obtained and these curves obtained are called solubility curves. For this, along x-axis we can take temperature, along y-axis we can take solubility in gram per 100 gram of solvent. ये फर्स्ट वाला जो ग्राम लिखा दिस इज फॉर सॉलिड, कितने ग्राम लिया आपने, इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड कितना डिजोल्व हुआ वो सॉलिड हम चेक करेंगे। बेस्ड अपॉन दिस सॉलिबिलिटी वी डिवाइड, और बेस्ड अपॉन टेम्परेचर वी डिवाइड सब्सटेंसेस इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस
whose solubility increases with increase in temperature. स्ट्रेट लाइन आ सकती है, कर्व आ सकती है, बट इंक्रीज होगी. सेकेंड, these curves are for first category of the substances, KCl, NaCl, KNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 etc. जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये इस टाइप के सब्सटेंसेस कर्व्स होंगे. सेकेंड कैटेगरी ऑफ द सब्सटेंसेस whose solubility decreases with increase in temperature. दिस डिक्रीज होती जा रही है. मीन लिथियम सल्फेट, थायलाइट SO4, सीरियम सल्फेट था Ce2SO4 होल थ्राइस. दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि इनमें प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैसा था? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी. मीन प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक है. इनकी सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज हुई थी? बिकॉज प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक. टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई थी. बट ये सेकेंड कैटेगरी के सब्सटेंसेस हो गए. बट इन थर्ड कैटेगरी ऑफ द सब्सटेंसेस, अभी मैंने बताया आपको कि सॉल्युबिलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, बराबर सी रहती है लगभग. बट एक चेंज जरूर होता है कि सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ये वन फॉर्म है. हेयर सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर फॉर्म. अभी हमने सोडियम सल्फेट का एग्जांपल लिया. एंड दिस इज द टेम्परेचर where this change takes place is called transition temperature. This temperature is called transition temperature. अभी सोडियम सल्फेट के लिए हमने डिस्कस किया था. तो the curves obtained when we plot solubility with temperature are called solubility curves. So the curves obtained when we plot solubility with temperature are called solubility curves. इनको solubility curves बोलते हैं. Very simple. So this is all about today's lecture. After when you see this video and if you are able to understand this topic easily, then you have to subscribe this video also, so that next time when I upload my next video you will get that video automatically. Thanks.